Hello everyone, Amit Aura from EcoVisioner. I'm back with news this week, India and the world. Please like and subscribe to this channel, and also teachers can share this video with their students so that they can relate their course with the world right now, what is happening in the present. तो वो अपने कोर्स के साथ इसको लिंक कर लेंगे और it will be easy for them to understand what theory part they are doing. When you relate theory with the practical life, it becomes very easy to understand. So I would request teachers to kindly share this video with their students. Starting with the first news, we have news about literacy rate in India. Or as always, Kerala is on the top. This particular news also talks about reducing gap between male and female literacy. मेल एंड फीमेल लिटरेसी गैप बहुत हाई था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस and also in 60s and 70s, but now it is coming down. You can see there's just 2%, 2.2 gender gap in Kerala, just 8.9% in Assam. Northeast states are also very good when it comes to female literacy rate or literacy rates, and also around 10% in Punjab and Tamil Nadu. So Kerala with male as to 97.4 literacy rate and female with 95.2 is the most literate state in India. Surprisingly, Andhra Pradesh has a big gap between male and female literacy rate, and also it has just 59.5% of literate females. When you talk about India, we have the total literacy rate at 77.7, and the gender gap in the whole country is around 15%. So this gap has to be filled. और अगर हम relate करें, which related to our chapter, we have human capital formation, in which we talk about education in India. So there, this is the current literacy gap, gender gap, you can say. I think the other states can also follow Kerala's model. The more literate you are, the more benefit to the country, the more productivity increases, efficiency increases. So literacy rate बढ़ना चाहिए जिससे देश आगे डेवलप होता है. Coming to the second news, we have news on demand. डिमांड की बात करते हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं. तो दिस न्यूज से दैट मेन हैव बीटन वुमेन इन सैलून विजिट्स. तो पहले एक बात थी कि सैलून में विजिट जो करती हैं वो लेडीज ज़्यादा करती हैं, बट here we can say is the ratio has gone up, so trend is changing. So demand curve for salons is going rightward due to the trend with more men are going, and the male footfall has gone up. So that way we can relate it to our topic demand. Change in trend has increased the demand for these salons and these pedicures and manicures. So a lot of new salons have come up. आपने देखा होगा pre-COVID time also. A lot of business in this area because the trend has changed. So due to change in trend, the demand for these things go, and the demand curve goes rightward. So we can relate it like that to our class 11th topic, demand microeconomics. Coming to some stats, students, you can see this is a figure showing 9 states and union territories and 5 states. तो इसमें दिखाया गया है with recovery rate of more than 80%. So some Indian states and 9 states and UTs have very good recovery rate touching 90%. And which is a simple bar diagram in stats class 11th. We can relate this to a simple bar diagram. And also below we see that there are 5 states, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, showing the total cases recovered and also active cases. So this is multiple bar diagram showing two types of information. One is active cases, एक show कर रहा है और एक recovered cases. So best example of multiple bar diagram using the news. Coming to the loss of biodiversity, 5 decades, पिछले 50 साल में freshwater species have actually got the brunt of these ह्यूमन एक्टिविटी, जिसमें काफ़ी उनकी जो डाइवर्सिटी है वो कम हुई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है हमारे को. पूरे वर्ल्ड में हमने बहुत लॉस किया है 50 साल में, एनिमल लॉस, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन ग्रीड ने एनवायरनमेंट को भी हार्म किया है, और प्लैनेट को 68% लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का. पॉपुलेशन
इतनी कम हो गई है 50 साल में. अगर ऐसा चलता गया, इफ इट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग, it will be a great loss. We are disturbing the whole chain. So you can see how the world is, I think, moving towards its end if human beings don't stop and introspect. If they don't introspect, then we are heading towards a big calamity now. तो अगर हमने नहीं ध्यान दिया, so we have lost lot of biodiversity. फिगर्स कहती हैं कि 68% बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट है इन 5 decades. दैट मीन्स 50 years. And it is not only the world. India is no different from this. We are also in the same boat. We are sailing in the same boat. So steps must be taken now to save the biodiversity. हमें plants and animals दोनों को बचाना है. Every individual has to take charge now and do it. The impact is seen. Next news says orange skies across UK caused by California wildfires. 8,000 किलोमीटर दूर आग लगी कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स. उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है. एक्सपर्ट्स से दैट ब्रिटेन में दिखाई दे रही है ऑरेंज स्काइज. सो दे ब्लेम इट ऑन दिस वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप. एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो सेड इट इज अनयूजुअल दैट so much of large dust plumes have traveled so huge distance. Again, human activities, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से वो आग लगी, उसका इम्पैक्ट लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में तो दिखाई दे ही रहा है, पर उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को हो रहा है. सो एनवायरनमेंट जो हार्म होता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री को नहीं होता है, इट इम्पैक्ट्स द होल वर्ल्ड. सो इट इज़ अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली रिस्टोर आवर इन्वायरमेंट. अगर हमने अभी स्टेप्स नहीं लिए ह्यूमन बींग्स ने, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर. सो एवरी इंडिविजुअल हैज टू टेक चार्ज. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट टू द लिमिट, सो वी कैन डू अ बिट. कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द आउटपुट इंक्रीज करनी है. आउटपुट इंडिया में चाइना से नाराजगी है बहुत कंट्रीज की. इंडिया इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स. वी आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, मोस्टली वो मैन्युफैक्चरर्स हु वांट टू कम टू from China to other countries. So we are giving incentives. Government has is planning to offer incentives worth 1.68 lakh crores, especially to the production linked to automobile, solar panels, appliances, textile units. They are government is inviting them to come to India and produce here. This will bring a lot of foreign exchange into India and also bring employment to India. तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगी फ्रॉम अब्रॉड, विच विल इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. और 50,000 करोड़ की अलग ही स्कीम है टू बूस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग. सो वी वांट ऑन वन हैंड वी वांट आवर रिलायंस ऑन द चाइना लेस, to be less reliant on China, and on the other hand we want to make things in India and also export from here. तो इससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी. Continuing with the same type of news, we have Royal Enfield, which had its two units in India. So now it is planning to set up its first assembly unit outside India in Argentina. तो उसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से वहाँ जब बनेगा तो एक ये उस साउथ अमेरिकन मार्केट को केटर कर पाएंगे इजिली, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इज लो इन अर्जेंटीना, एंड ऑल्सो the countries to which this export will be done from the areas of America, the areas of West Indies and areas of South America. It will be easy to transport, it easy to export Royal Enfield, जिसकी डिमांड वहाँ पर भी है, in also in some European nations. So that way it is opening its assembling unit outside India in Argentina. In BOP account it will be foreign direct investment abroad. The outflow of foreign exchange capital account का ये पार्ट दिखाया जाएगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली. कमिंग टू मिस्टर मुकेश अंबानी, एज यू ऑल नो, ही हैज रिसेंटली बॉट फ्यूचर ग्रुप एट अ लो वैल्यूएशन एज द मार्केट सेज, एंड नाउ Amazon is investing $20 billion into this company, that is Reliance Retail. So people say, experts are saying कि एक opportunist view है. We thought that Mukesh Ambani is trying to fight the monopoly created by Amazon,
but it is seen that Amazon is going to buy a big stake in Reliance Retail, so that तो उन्होंने खरीदा फ्यूचर ग्रुप से और बेच दिया, देखा जाए तो रिलायंस ग्रुप ने Amazon को. तो मे बी इन फ्यूचर इट इज मूविंग टूवर्ड्स monopoly of Amazon. So a great, he's a real opportunist. इस क्राइसिस के टाइम पे द सबसे बड़ा गेन जिस कंपनी को हुआ है, वो लगता है कि रिलायंस को हुआ है सबसे बड़ा गेन. इट हैज बिकम अ ह्यूज कंपनी. आई थिंक इट हैज क्रॉस्ड $200 billion, and also it has also he has also become one of the richest, around I think sixth richest man in the world. So a lot of gain in the time of crisis. इनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने काफी गेन किया. फ्यूचर इनके हाथ में है. लेट अस सी हाउ. रिटेल पे तो इनकी मोनोपोली होगी, and he has sold this, he's selling his business of retail to Amazon, $20 billion, and Amazon is investing. Coming to another stats we have here, we are showing the horizontal bar diagrams, and we are showing the production as on January 2018. वर्ल्ड के टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर्स बाय आउटपुट शेयर देखी जाए, अब समझ आया कि यूएस इतना कंसर्न्ड क्यों है चाइना को लेके. 2018 में हम देख सकते हैं कि almost 29% of the world's output, more than 1/4 of the world's output is being produced by China, followed by just 17% by US once US was on the top, with just in single figures Japan, Germany, Korea, and now India at 3%. So if you compare India and China, you can see China is 9 times more than India, more than 9 times. So you can see what output share China has of the world. तो अभी भी पूरा वर्ल्ड इसलिए कंसर्न्ड है कि हम लोग सप्लाई चेन्स टू मच डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर. सो दीज आर द वार्निंग बेल्स, एंड एवरी कंट्री इज ट्राइंग कि वो अपनी कंट्री में या दूसरी कंट्री में आउटपुट बढ़ा सके. बट यू कैन सी द इंडस्ट्रियल आउटपुट शेयर इज वेरी हाई इन चाइना, जो अभी 10-15 साल कम होने वाला नहीं है. Coming to some news on UN, yes, UNGA, United Nations General Assembly, it has adopted a resolution recognizing COVID-19 as one of the greatest challenge. तो ऐसे UN General Assembly की मीटिंग होती है. हमारा चैप्टर है पॉल साइंस 12th, we have a chapter on United Nations. This resolution is urging member states to enable all countries to have unhindered timely access to quality, safe and affordable diagnosis, medicines and vaccines. Equality पे बात कर रहा है. India and 168 countries voted in favor of this resolution. तो काफ़ी कंट्रीज़ ने, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ ने बिल्कुल इसकी फेवर में बात की है कि सबको एक्सेस मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए when it comes to medicines and vaccines. Coming to US intervention in other countries, Venezuelan President Nicolas Maduro said that they have caught an American spy with weapons and cash near the 2 refineries in the Falcon state. So as we know that secretly, of course, US is working against the government right now in Venezuela. वेनेजुला की हालत वैसे ही इकोनॉमिकली बहुत ख़राब है, एंड CIA is trying to create problems in Venezuela, क्योंकि वेनेजुला रही है एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट रही है. तो नाउ द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू, एज ऑलवेज, अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दिस एरिया. इट द लार्जेस्ट, अगर हम बात करें, इट दिस कंट्री हैज लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. सो इट हैज़ बीन एलिज्ड दैट दे हैव कैप्चर्ड अ US स्पाई जो इनकी रिफाइनरी में कोई ब्लास्ट या कुछ एक्सप्लोजन करने की कोशिश कर रहा था. सो इन्फ्लुएंस ऑफ US इन अदर कंट्रीज. Continuing with expanding US in this area of Indian Ocean, तो US ने साइन किया है डिफेंस डील विद Maldives to deepen engagement for maintaining peace and security. As they say, they want to contain China in this area. So US is trying to get some good friends in this area so that they can continue with their hegemony. So here the Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Reed Warner, and Maldivian Defense Minister Maria Diji also discussed US support for the nation in its COVID-19 response. So making a lot of friends in this area.
and friends again working against China, friends which will help Americans uh, check China or keep a check on China. So I personally think कि चाइना के ऊपर चेक रखने के लिए opportunist America is trying to have some friends in this area. Coming to the next news, which is very unfortunate, what Indian education system or how this is going on. तो हमने एक बात की थी, we talk about human capital formation. So we spoke about challenges. We have one challenge that we have low academic standards. So varsity in the Noida, the Abu Kalam Technical University, uh, there were 460 MBA and BTech final year students which were caught cheating in the exam. So you can understand that how we can understand that when we complain, हम इतना complain करते हैं कि यार वहाँ जाओ तो अच्छी सर्विस नहीं मिलती है, हॉस्पिटल्स में लोग ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हमारी. सो चलता है जनरेशन, चलता है इंडिया में. तो अब यही फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनको चीटिंग बहुत कॉमन लगती है, बहुत इजी है उनके लिए, टुमारो व्हेन दे गो टू दीज हाई पोस्ट एंड गेट दीज जॉब्स, वहां पर भी वो चलता है, दे विल टेक इट वेरी इजी. तो पायलट्स, इंजीनियर्स अगर ऐसे बनते हैं और बीटेक स्टूडेंट्स एंड एमबीए, टुमारो दिस एमबीए बिकम्स अ मार्केटिंग हेड ऑफ सम कंपनी और अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंपनी, ही विल डू करप्शन देयर ऑल्सो, क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज बहुत सिंपल है कि चलता है. जब वो इस लेवल पे आके बीटेक के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स उस लेवल पे आके जब वो चीटिंग को इजी मानते हैं, तो वेयर इज द रियल एजुकेशन, वेयर इज द रियल नॉलेज. तो व्हेन दे गेट जॉब बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज, ऑफ कोर्स उनको डिग्री मिल जाएगी इस कॉलेज से जब वो पास हो जाएंगे इस एग्जाम में जो चीटिंग करके हुआ है. तो फिर वो जब आगे वो जॉब में आएंगे तो वहां भी वो करप्ट ही रहेंगे. वो जब वो किसी बिजनेस में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वो नकली सामान बेचेंगे. जब वो किसी और जगह पे होंगे, वो डॉक्टर्स बनेंगे तो वो किडनीज गायब करेंगे एंड सो ऑन. So we need to have a very strict policy against cheating, and it is no Greater Noida, which is a city. If we go deep to the interiors of India, you can understand what is happening there. Very sad, very unfortunate. ये बहुत एक एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है इस बच्ची ने जो किया है. इतना ज़्यादा बच्चे को प्रेशर देना, इतना ज़्यादा बच्चे को टेंशन देना, उसके टारगेट्स हाई सेट कर देना कि वो अचीव करे वरना अच्छा नहीं होगा, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देना. सो डे बिफोर yesterday a 19-year old मेडिकल एस्पिरेंट, नीट का एग्ज़ाम था संडे को, Saturday this girl thought that she was got so stressed that she thought that she would not be able to manage. And what she writes that people have so many expectations, मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, अगर मैं नहीं पूरी कर पाई. सो वेरी सैड फॉर द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स की ही गलती मैं मानता हूँ. काश उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया होता कि योर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन any exam, NEET exam. You don't become a doctor, I'll get you a small shop, you go and run that shop, you don't work at all, stay at home but stay alive. मैं अपने बच्चे को ये समझाऊंगा कि कोई भी एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेरी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. वेरी सैड, मेनी स्टूडेंट्स इन इंडिया, thousands of students in India commit suicide every year. We should concentrate on this. Media, I request media people to concentrate and talk about these issues which are very, very important. Forget about Riya Chakravarti and Sushant Singh Rajput and forget about Kangana. We desperately need to save our children from this stress. Tell them that their life is more important than any exam. So this we have to change. This system we have to change. Very sad. Nothing is more important, students. I'll tell you, nothing is more important than your life. If your life continues, you can become a simple photographer. You can be an artist. You can choose any profession. You can be a good teacher in the future. So that is what you have to learn. Your life is utmost important. And teachers and students, we are back with our Olympiad this year, EcoVisioner International Olympiad. For that, this year we are doing it online, so you have to download the app, EcoVisioner app from the Play Store. And why should you enroll yourself? Students will be able to practice the CBSE board pattern questions. You will get an opportunity to compete with thousands of
students in India and abroad. The paper will be MCQ based, which is surely going to come in your board exams. And we have also given some online free tests there. You can practice it there. Student will also get the ebook free with the Olympiad fees which they pay. And teachers will get free access to all the ebooks launched by EcoVisioner team. And teachers will also become the registered member of our group. And schools with more than 25 students will be mailed important worksheets made by CBSE experts. Here are the subjects we offer for the Olympiad. Please go through the list of the main subjects for class 12th, which we are providing, and we have 2 subjects for class 10th and 3 subjects for class 11th respectively. This is our 5th EcoVisioner Olympiad, which is due to COVID-19, which is happening online this year. So in the end, we have these last details. Fees ki baat kare, so we have just 100 rupees for the Olympiad per student. If the child is interested in getting a MCQ ebook, he just pays 150 rupees. The payment modes are given below. And for registration, you can just mail us your form at this email ID, ecovisioner@gmail.com. Thank you. Stay blessed. God bless you.